Hello students, today in this video we are going to study the second part, the black aeroplane, from the chapter Two Stories About Flying from our book First Flight. The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane. It was night time when the sky was clear and the stars could be seen twinkling. The pilot felt peace in being above a country that had fallen asleep while he was flying over France to England. It was 1:30 in the morning and he was fantasizing about holidaying with his family. रात का समय है, आसमान में तारे हैं और पायलट एक कंट्री, एक गांव के ऊपर से फ्लाइट उड़ रहा है और वो कहाँ जा रहा है? फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है. एंड व्हाट इज द टाइमिंग एट दैट टाइम? 1:30, सुबह के 1:30 हो रहे हैं और वो क्या फैंटेसाइजिंग कर रहा है, ड्रीम कर रहा है कि वो अपने फैमिली के साथ छुट्टियां बिता रहा है. When the aeroplane was in France, the pilot thought of informing the Paris control personnel about its presence and for instruction. At that time, lights from the Paris city were blaring at him. He informed the control agency, to which they replied with further instructions or direction. राइटर को अपनी एरोप्लेन से बाहर क्या दिखता है? सिटी और उसकी लाइट्स दिखना चालू होती है और वो पेरिस कंट्रोल स्टेशन को कॉल लगाता है एंड बताता है कि वो डकोटा DS-088 में वहाँ से वो क्या कर रहा है? फ्लाइट कर रहा है फ्रांस के ऊपर से. The control room at Paris instructed him to turn 12 degree towards the west. जो पेरिस कंट्रोल स्टेशन को उसने कॉल लगाया, उसको वहाँ से बताया गया कि इंग्लैंड जाने के लिए he has to make a turn of 12 degree towards the west. After receiving the instructions, the pilot geared up and followed them while putting the last fuel tank into operation. उसके फ्यूल टैंक 2 थे, एक ओवर खत्म हो गया था, उसने दूसरे को स्विच किया, मतलब सेकेंड वन फ्यूल टैंक स्टार्ट कर दिया उसने. All this time he was dreaming about his time with his family and then he started thinking about having a satisfactory breakfast at the destination point. पहुंचने के बाद, इंग्लैंड पहुंचने के बाद घर पे वो क्या करेगा? एक शानदार सुबह का नाश्ता करेगा विथ फैमिली. ही वॉज काम एज एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान्ड. सब कुछ बड़ा आराम से हो रहा था, सब कुछ इजीली जा रहा था तब तक. नाउ द प्लेन हैड क्रॉस्ड पेरिस when he started seeing clouds in the sky. The presence of clouds made it unsafe to travel by air because there were chances of a storm. They were so huge and dark that the pilot compared them with black mountains. He knew he could not pass them as it was impossible to go above them or escape them with the amount of fuel that was left in the last tank.
जो बादल थे वो ब्लैक कलर के थे और काफ़ी बड़े साइज के थे. सो इट वॉज डिफिकल्ट विद द एरोप्लेन. वो जो डकोटा उसने लिया था विद दैट ओल्ड वन, ये काफ़ी मुश्किल था कि वो बादलों के ऊपर से लेफ्ट या राइट से उसको पार करे. The right decision would have been to fly back to Paris safely, but the pilot's decision making was clouded by his wish to meet his family. सेफ क्या होता कि पायलट वहाँ से वापस पेरिस के लिए चला जाता, बट उसको अपने फैमिली से मिलने की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि वो क्या करता है, उस डेंजर को नेग्लेक्ट करता है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है. He so desperately wanted to be with his family and have the English breakfast he had been dreaming of all day that he took the risk of not going back. वो ब्रेकफास्ट, इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट करने के लिए वो इतना डेस्परेट है कि वो रिस्क लेता है और उसको ब्लैक माउंटेन्स क्लाउड में एंटर कर जाता है. Thus he headed the plane right into the storm. It was so dark because of the storm that nothing was visible outside the plane. He started losing control of the aeroplane. The compass and other instruments had also stopped working because of the bad weather. He became helpless. एक बार जब वो स्टॉर्म में, बादल में एंटर करता है तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है प्लेन के बाहर. एवरीथिंग वॉज डार्क आउटसाइड द प्लेन. और धीरे धीरे क्या, उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं. एट लास्ट वो रेडियो का इस्तेमाल करता है. ही ट्राइड कॉलिंग द पेरिस कंट्रोल एजेंसी हु हैड हेल्प्ड हिम अर्लियर बट कुड नॉट कनेक्ट बिकॉज ऑफ द वेदर. वो वापस पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल लगाता है टू आस्क फॉर एनी हेल्प, लेकिन वो बैड वेदर की वजह से कंट्रोल मतलब कनेक्शन नहीं होता है. इन द मिड्स ऑफ नोवेयर व्हेन एवरीथिंग फेल्ड, ही सॉ अ रे ऑफ होप व्हेन ही सॉ अनदर एरोप्लेन. ही फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही सॉ अनदर पायलट्स फेस एंड विलिंगनेस टू हेल्प हिम escape the storm. He thought to himself that the other pilot is very kind, as he knew that they were lost and was trying to help him. जब वो सब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, इवन रेडियो वॉज नॉट वर्किंग, तो उसको एक उम्मीद दिखती है. एंड व्हाट वाज दैट कि एक दूसरा ब्लैक कलर का एरोप्लेन उसको अपने सामने से दिखता है और उस प्लेन में पायलट जो है वो उसका फेस भी दिखता है और वो उसको देख के ऐसा लगता है कि वो पायलट उसकी क्या करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है. ये देख के अब जो अपना राइटर है उसको काफ़ी खुशी होती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है. The other pilot took his plane ahead of the lost aeroplane to make it easier for them to follow, while the author followed him like an obedient child. रास्ता दिखाने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आगे आगे क्या करता है, फ्लाई करता है, एंड पीछे से हमारा ऑथर एज ओबीडियंट चाइल्ड उसको फॉलो करता है. ही वॉज ऑल्सो पैनिक बिकॉज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट. हाफ एन आवर तक उसके पीछे पीछे उड़ने के बाद उसके प्लेन में जो टैंक में फ्यूल है वो सिर्फ 5 और 10 मिनट और उड़ने के लिए ही बचा है. एंड आफ्टर दैट ही विल बी इन अ ग्रेट डेंजर. एट दैट टाइम व्हाट ही सीज दैट द ब्लैक एरोप्लेन इज गोइंग डाउन एंड ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन. तभी उसको क्या दिखता है कि वो नीचे की तरफ ब्लैक एरोप्लेन उसका डायरेक्शन हो रहा है और ये उसके पीछे पीछे ये भी फॉलो करता है. It was only then that he started coming out of the storm and could see the runway to land his plane safely. When he turned to thank the other pilot, he realized that the plane that helped him had disappeared as soon as he came out of the
स्टॉर्म। जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर निकलता है लैंडवे की तरफ, वो क्या देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन उसकी हेल्प की कर रहा था वो सडनली डिसअपीयर हो गया, वहां से वो गायब हो गया है। The author did not know where he had landed but was not afraid of leaving his plane unattended. He headed straight into the control room to ask about the other pilot. लैंड करने के जस्ट बाद अपने प्लेन को वो अनअटेंडेड, मतलब कोई उसको देखने भी नहीं आता है, वो फटाक से उतर के कहाँ जाता है, कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहाँ जाके वो उससे पूछता है कि वेयर वॉज दैट अदर प्लेन, वो जो दूसरा प्लेन ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ है और वो कौन था जो उसके साथ उड़ रहा था। And why he was inquiring about the other aeroplane? Because he wanted to thank him for the help. But what happens there? The lady who was sitting there was surprised to hear that there was another aeroplane flying in the sky, as she has not received any signal on the radar. To his utmost surprise, the lady informed him that there was no other plane in the sky except his because of the bad weather. He is left astonished with a lot of questions unanswered in his mind. वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि who was that person who helped him, जबकि लेडी कह रही है कि वहाँ कोई दूसरा प्लेन नहीं था। तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं कि किसने हेल्प किया, कौन था वो, फिर कहाँ चला गया। विद दिस क्वेश्चंस ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि किसने उसकी हेल्प की। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।